Hello guys, I welcome you back in the show. And today again we are starting off with the second stock of the Gem series, which is I actually mentioned in the group, which is the stock. It's Indiabulls Housing Finance. Without wasting the time, let's go on the fundamentals then technicals. So as we can see, this is Indiabulls Housing Finance. I'm using Money Control Pro for it. So basic, the stock high was 313.70 rupees, 52-week high. 52-week low is 105, which is just uh, May end is low. The stock has hit the low. Why? The reason I will tell one by one going further. So, what is the sector? What we do at the time of fundamental analysis? We first see what is the sector B. Means the company is operating in which industry. What is the P of that industry? And we multiply it with EPS, earning per share of that company. So we get the actual market value. This is the normal formula. We all know about it. So the sector P is, as we can see here, is 23.86. And now, what is the EPS? We'll directly go down and check the EPS. What is the EPS? EPS is 27.72 rupees. So 27.72 rupees, 72 rupees, and 23.86 is the ratio, P ratio. So the answer comes to it 661, which is really high, but actual value the stock has is around. We'll check it in the next why it is 400 rupees. So currently the stock price is 122.60. What is actual valuation as per P ratio is 661. What as per me the valuation is 400 rupees. So now why the stock is falling? The stock is falling because what DHFL has done. DHFL, the company which has gone just means देवालिया हो गई है वो वाली company. What they do is they don't have money to pay their non-convertible debentures. And what Indiabulls Housing Finance is doing? Indiabulls Housing Finance is prepaying its non-convertible debentures. So they are decreasing their liability. In turn, they'll decrease their interest payable, which in turn will increase the net profits of the company. So the share is falling because of that only. People are thinking that they are first giving preference to the non-convertible debentures, and the non-convertible debentures will be paid off, and then the company will go liquidate. But we'll see how much the company has funds, what's the book value of the company, and all we'll see. The company will not go liquidate. The company will not bankrupt. The company has much strength. We'll check it out here. So what is the market cap of this stock? The market cap is 5,744 crores. This is not a small amount. This amount, if it gets liquidated or bankrupt from the market, it's a huge amount. And also Indiabulls Housing Finance, as it is the oldest company, so there are less chances of it getting liquidated looking at the balance sheets now. So going ahead, what the money control guys are telling us. So technical rating they are giving as bearish. I don't think it's bearish, it's bullish. I'll show in the charts why it is bullish. So then forum means the investors like us, you, we vote here on money control, and the voting shows that 75% are saying to buy, 13% are saying to sell, 12% is saying to hold. I come in that 75%. So who is the top investors in this company? Rakesh Jhunjhunwala. We all know who is he. He has 0.79% and he has bought at the price of 219 rupees. Now we all know what will happen to this stock. Rekha Jhunjhunwala, wife of Rakesh Jhunjhunwala, she also has 0.34. Means in total they have 0.79 plus 0.34. In total they have 1.13% of the company. Then BREP Asia 11 means they are the institutional investors.
They have 2.35% stake at 262 rupees. Abu Dhabi Investment Company, the biggest investment company of UAE. We can say it is the biggest investment company of Asia also. They have 1.30% stake at 262 rupees. This is also not a small stake, and price, you can check the price, is 262. Currently price 126. Yesterday's high 129. And some mutual fund also has 0.79, 0.65. Everybody's average buy price is about 200 rupees. And stock is currently trading at 50% less from 200 rupees. So what we can do, we'll see it on charts. Moving ahead. Financials. This is why the stock has fallen after March 22 results. March 20 results, I think it's not out yet. No, it's out. Yes. So why has it fallen? In December, firstly, we'll move to half yearly. In September 2021, we have a sales of 4553 crore. The sales has decreased to 4463 crores. Other income remains the same. Expenditure decreases. Why? Because they have started paying off their non-convertible debentures prepayment. So interest cost to that will lower. We can check it here also. It was 3122 and now it's 3119. So 3 crore interest has been lowered. And as we move on, next September, means September 2022, we'll see that the interest cost will more lowered now. Okay. Then net profit has increased. No impact on the sales has decreased, but but net profit has not decreased. It has increased. So now what's the shareholding? The stock has hidden due to this. Shareholding in March 2022 has decreased to 9.66, while in September 2021 it was 21% with the promoters. Means promoters are now not holding the shares of Indiabulls Housing Finance. Then who is holding? We'll see who is holding. FIIs is holding the same. 26% is with FII. 26%, out of which some 10% is with the foreign investors only. Means the foreign institutional investors only. Out of which one is Abu Dhabi Investment Company. DII also holds 13%. So they are also maintaining the level of 13, 14, 12, 13, 14. The promoter has sold. Now who is holding that sold share? In September 21, public, means people like you, me, we were having only access to 35% of the stake. But in now May 22, we have access to around 45% of the company. If the promoter sells some more, then public will be having a 50% in the company, due to which the majorly the stock has got hidden, because the promoter has sold their shares. They have decreased it by around 15%. 15% when promoter sells, the investors become shaky. Means what is happening to the promoters? Why are they selling? Why are they not holding their share? The reason why promoter is selling, it is not out yet. So we'll be waiting for it. Others mean people like mutual fund and all. They hold 5%. Mutual fund may also cover in DII, but some of the mutual fund don't come in DII category, so they come in other. So they hold 5%. So here also it is highlighted. Main promoter has decreased their holding. Promoter is decreasing their holding. This is the main reason why the share is falling. Who are the peers? Peers is, we know that LIC Housing Finance, PNB Housing Finance, HDFC, which is now merging with HDFC Bank. So they will be having a larger market share. Group Finance, Awas Finance. About the company, this you can check on Money Control. It is accessible for everybody. So moving on to ratios. The company earns EPS of 27, which was in March 2020 51. This is March 21 because
the ratios of March 2022 has not been calculated yet by money control. So as soon as that come, I will update it in a WhatsApp group or by a separate small video. Okay. What happens to book value? What I was telling, price is 120 to 26 rupees. The book value of the company is still 362 rupees. Price is down, book value is 300, book value is higher, which means the stock is undervalued. Stock is undervalued means, as per normal finance knowledge, this means that the stock is in buy zone. But the reason why there is low buying here is the promoter is selling their shares. What the dividend give, the company gives dividend of 9 rupees. So which is also manageable. Mainly what I was telling, see here, the financing activities is minus 10,632 crores. Financing activity is minus why? Because they are repaying their debt. Repaying their debt which they have taken non-convertible debentures with their prepaying. So it has deducted its financial activities, means they will now pay less interest as compared to what they were paying. Gross margin continuously increasing, but net margin is falling because of the COVID. They need to give the hikes in the salaries and the other expenses other than what is the main business expenses. They need to give some hikes and some all. So net profit has been decreasing, but gross profit has been increasing. What returns it provides to the capital employed? It gives the returns of around 16.42%. What's the liquidity? The company has a current asset of 2.20. Current and quick both is same, means the company has quick assets of 2.20 against 1 rupee debt, 1 rupee liability. When the current liability 1 rupee, the company has a asset, current asset means quick asset which they can sell and convert it into money. It is 2.2. So the company at no angle looks to me the bankrupt company. Moving, debt is higher because this is a housing finance company. Debt would be higher. Turnover ratio, the company earns 10 times greater than the assets they are holding. So that's also normal. CAGR, 3-year CAGR is minus because of first 2 years COVID, and current year due to promoter the stock has been falling. So return is minus. Valuation PE, sector PE 23.86. Stock P is only 7.09, which is we should buy. This company will not go bankrupt, as what I see here on charts. On the fundamentals, I don't see company to go bankrupt. If the company go bankrupt as of now, then also we'll get 367 rupees as per book value. But if we not consider it, we'll get at least 100 rupees from this share by selling all its net assets by the liquidator. So no issues in investing in this company. Now we are done with finance fundamentals. Now we'll go with the technical analysis. What the technical tells. Okay. So let's go on the charts. So this is weekly time frame, Indiabulls Housing Finance. Check it out here. This was 7th April 2020. 7th April 2020 means COVID period. The stock was at 362. COVID blast, everybody blasted, entire market blasted. It came down to 91 rupees. It stayed over here, given 3 weeks for accumulation, pumped, retest, higher pump. The higher pump was in June 21, which is June 21 and March 20, which is around 1 year, 3 months, 1 year, 4 months. In 1 year, 4 months, the company has given 174% return. This is not small thing. 174% in 1 year, 4 months is around 50 to 60% in 1 year. No one gives 60% in 1 year. As we all know, FD 2 now gives 4 to 5%. So this is better than FD. We have some risk, थोड़ा रिस्क है इसमें, लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर.
ये पूरा पुरानी सिनेरियो है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस गिरा, इसको इसको देखना, इसकी तरह ही गिरेगा। ये एक साथ गिरा है क्योंकि कोविड था, ये एक साथ नहीं गिरेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल में गिरेगा। यहाँ से गिरा, खड़ा हुआ, ये ट्रेंड लाइन को छुआ, गिर गया, वापस खड़ा हुआ, ट्रेंड लाइन को छुआ, वापस गिर गया। अब यहाँ पे गिरने के बाद क्या हो रहा है, ये जो लेवल है जो है 100, 101 है नीचे के साइड, और ऊपर के साइड है 115। ये जो लेवल है वो पिछले 819 दिन में ये कभी भी नहीं टूटा है। टूटा है तो वापस ऊपर आ गया है। मतलब इसका उतना इतना नीचे का सपोर्ट बेस स्ट्रॉन्ग है उतना कि जैसे नीचे जाता है वैसे ऊपर खींचा आता है। सो अभी हम लोग इधर का क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फॉल था क्योंकि कोविड था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉल आ गया है। अब मैं आने वाले दिनों में क्या देख रहा हूँ, जैसे पे यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन जोन दिया था यहाँ पे मार्केट ने, ये इधर थोड़ा नीचे आएगा, ये कुछ 110 के आजू बाजू घूमेगा, और 2 वीक इधर ही घूमना चाहिए। ये नहीं घूमा तो कोई नहीं, ये तोड़ के फिर रिटेस्ट आके फिर ऊपर चले जाना। लेकिन ये अभी जो यहाँ पे घूमने का टाइम दे रहा है ना, ये एक्यूमुलेशन जोन है। ये एक्यूमुलेशन जोन को लपक लेना है। यहाँ पे जितना खरीद सको खरीदो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, हर फॉल पे खरीदो। एक्यूमुलेशन जोन जैसे टूटेगा वैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगा। ये ट्रेंड लाइन जैसे वो तोड़ेगा 140 के आसपास जाएगा, वापिस नीचे आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। ये वापिस नीचे आएगा 117, 118 के आसपास, और जब 117, 118 पे आके और वहां से ऊपर निकले तो आपका और जितना भी फंड बचा हो वो पूरा इसमें लगा देना, क्योंकि ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिटेस्ट होने के बाद पंप आता है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है अभी इससे, कि आने वाले 3 वीक, मैक्सिमम 3 वीक ये रिटेस्ट तक खत्म कर लेगा। मतलब अभी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक तक ये 140 के आसपास तो चला जाएगा। जैसे 140 तक जाता है, तब अगर आपको थोड़ा कुछ खाली करना हो कि फिर नीचे खरीद लेंगे, पूरा खाली मत करना, स्टॉक नीचे नहीं आया तो फंस जाओगे। तो यहाँ से वो 140 तक जाएगा वो 140 जाएगा। आपको 30-40% बेचना हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए तो बेच सकते हो, बेच के नीचे आने का वेट करो। जैसे ही नीचे आए 125 के नीचे आए, वापिस वो 30% जो बेचा था उसको वापिस उठाना चालू करो, प्रॉफिट के साथ पूरा उठाना। जितना प्रॉफिट कमाया था वो 30% बेच के वो भी इसमें ही लगाना, वो किसी और में मत लगा देना फिर, वरना वो 30% कमाया गवा दोगे। उसको यहाँ पे कमाना, टोटल एक्यूमुलेट कर लेना ये स्टॉक को। ये स्टॉक को मैं वापिस 275 के ऊपर देख रहा हूँ, जो ये देगा अपनो एग्जिट लिक्विडिटी। ये एग्जिट लिक्विडिटी के अंदर सब जो बिग 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 इन्वेस्टर्स है, वो जिन्होंने भी हाई पे परचेस किया था, वो लोग थोड़ा थोड़ा निकलने लगेंगे। मतलब अभी राकेश झुंझुला के पास टोटल, वो और उनकी वाइफ के पास 1.13% स्टेक है, तो वो उसको आधा % कर देंगे। तो वो एग्जिट लिक्विडिटी के लिए वो पंप देंगे, और वो पंप कब क्यों देंगे, वो लोग क्या करेंगे, और थोड़ा खरीदेंगे यहाँ पे नीचे के भाव पे। वो जैसे खरीदेंगे पंप आएगा, एग्जिट लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। एग्जिट लिक्विडिटी पे निकलेंगे, वो अकेले निकलेंगे, म्यूचुअल फंड वाले भी निकलेंगे, उनका लॉस खत्म होगा। जैसे ही वो लोग निकलना शुरू हुए, अपन को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। एकदम से जैसे वॉल्यूम बढ़ने लग जाए वैसे अपन को भी निकलना शुरू कर देना है। यहाँ पे अराउंड 100% का प्रॉफिट पकड़ के चल सकते हो। जेम स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको अभी 100% पंप के लिए पकड़ के रखो, क्योंकि एग्जिट लिक्विडिटी देगा तो एग्जिट लिक्विडिटी में अपन 3 साल तक इसको होल्ड नहीं कर सकते। इसको वापस होल्ड करेंगे, ये जैसे वापस नीचे आएगा 150 के आसपास हम लोग वापस लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वैसे आप इसका देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई है 1400 के आसपास का, कुछ ऑल टाइम हाई है 1437 का ऑल टाइम हाई इसका। अभी 112, मतलब 90% तो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, अभी 112 बचा है। अब हम लोग यहाँ से 100% भी लेके पकड़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन अभी 100% को नहीं छोड़ना है। अभी का जो पंप है ना, ये 100% को खेलना है। अभी एक्यूमुलेशन जोन में है, इसको ले सकते हैं। ये मैंने अपना व्यू बताया, आप खुद का चार्ट के ऊपर ऐसा पूरा सेम टू सेम ड्राइंग कीजिए। आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग नहीं करना हो तो सेम ड्राइंग कीजिए, कोई चेंज नहीं है, ऐसा जैसा मैंने किया है वैसा सेम टू सेम ड्राइंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस का स्किल्स बढ़ेगा कि भाई चलो ये हुआ है, फिर आप इसको मॉनिटर करोगे, भाई यहाँ पे प्राइस आया है, यहाँ पे प्राइस घूम रहा है, ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से प्राइस बढ़ेगा,
ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा वापस, आपका इससे टेक्निकल एनालिसिस भी इम्प्रूव होगा। सो ये मैंने अपना व्यू बता दिया है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, जो मेरा सेकंड जेम स्टॉक है, जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बता दिया था कि मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ, यही है मेरा सेकंड जेम स्टॉक। और दूसरा अभी वेल्सन इंडिया का तो आप देख ही रही हो, इसका एक अपडेट दे देता हूँ सिर्फ, जो पहला जेम स्टॉक था उसका, जैसा कि ये रेंज के अंदर आया, ये रेंज के अंदर आके मेरा एस्टिमेशन था कि 70 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होता है ये पंप होना शुरू कर देता है। हो गया है कल 72.15 का क्लोज है, मतलब अपना पंप अप इसमें फिक्स है। इसमें अपन अपना वही पुराना टारगेट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला है वो देख लेना। वो फर्स्ट वीडियो का ऐसा हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो बोलना नहीं पड़ेगा, अब तो आप कर ही दोगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और उनको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कम्युनिटी को बढ़ाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Will come with another analysis of gem stock whenever I find it, and निफ्टी और उसका एनालिसिस तो अभी मैंने एक बार तो शेयर कर दिया है। मैं एक ओपन फोरम भी देख रहा हूँ कि आप स्टॉक बताओ, मैं उसका लाइव एनालिसिस करके आपको दे दूंगा यूट्यूब पे। आप पूरा स्टॉक का लिस्ट दे देना मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैं उसके अंदर पूरा यहाँ पे चार्टिंग करके फिर मैं एक वीडियो शूट करके आपको वीडियो भी दे दूंगा, ताकि आप जो स्टॉक चाहो उसका भी आप एनालिसिस देख सको। और आपको कोई और डाउट्स हो तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना क्या डाउट्स है। और बाकी मैं व्हाट्सएप का लिंक, मेरा ट्विटर का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो कोई व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं हो सकता वो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे सेम अपडेट देता हूँ जो मैं व्हाट्सएप पे ऊपर देता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।